Hello and welcome friends to the second part of the video, that is capitalization and punctuation. In first video we have already discussed about the uses of capital letters. So this video will be only confined to punctuation. But before going further, there is one thing for you, that I have decided to make it in two languages, that this video will be bilingual in nature. Why this will be bilingual in nature? There is one main reason behind this. Only keeping in view the standard of my students and their familiarity with Urdu language forced me to make this video in two languages, so that they can learn it, they can understand it more clearly. So coming to the topic, punctuation. Punctuation is derived from Latin language. It has its roots in Latin language, where it lies as punctum. It is read there as punctum. What does the punctum means in Latin language? It means to mark a point or a pause. To mark a point or a pause. In Urdu, we call these punctuation marks as रमूज़ अवकाफ. क्या कहते हैं उर्दू में? रमूज़ अवकाफ. जो निशानात उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रमूज़ अवकाफ. और अगर हम अवकाफ को देखें, अवकाफ वक्फा तो हम जानते ही हैं. वक्फा का मतलब क्या है? वक्फा का मतलब है ठहरना. So coming to the English language now, to mark a point or a pause. Pause. We know, we are familiar about this word pause because of cell phones. Pause means ठहरना. So वक्फा, ठहरना, रमूज़ अवकाफ. So we can say it more clearly that where we need to stop a while, stop a little bit, we use certain markers in English language. Those markers act as signals to the readers. Those markers act as signals to the readers. So punctuation markers are pauses in English speech. So punctuation markers are pauses in English speech. जहां कहीं भी हमें रुकने की जरूरत पड़ती है, जो वहां पे वो स्पेशल निशान इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं निशानात को हम क्या कहते हैं? Punctuation markers. So what does punctuation means? Punctuation means putting markers rightly in speech is known as punctuation. Rightly. Remember the word rightly. It is not you will put a full stop at any place. You can say I have done the punctuation of the sentence rightly. No, there are certain rules of using full stop, comma, etc. Those very rules, when you follow those very rules, we can say you know the punctuation very well. So putting these markers rightly in speech is known as punctuation. Now coming to the topic, what are the benefits of punctuation? Benefits of punctuation. Why we need to discuss these punctuation markers more precisely? First of all, these markers makes our reading very easy. इससे क्या होता है? पढ़ने में आसानी होती है. Second one is these act as signals to the readers. These act as signals to the readers, just like the signals of traffic signals. Just like the traffic signals. Why the green light? जहाँ पे green light क्या काम करती है? जहाँ कहीं भी हम green light देखते हैं तो हमें इशारा मिलता है आप जा सकते हो. और जहाँ कहीं भी रेड लाइट देखी, कोई हिल भी नहीं सकता है. यू नीड टू स्टॉप राइट देयर. आपको वहीं पे ठहरना है. इसी तरह full stop. Whenever you will see full stop in English language, you need to stop there. You cannot move further. जिस तरह कुरान में क्या होता है, वहां पे जो ही आयत खत्म होती है वहां पे रुकना पड़ता है. Same is the case with full stop and same is the case with traffic signal, that is red light. And there are so many signals in traffic. We are not here to discuss traffic signals. We are here to discuss punctuation markers and their uses. Some other examples of punctuation markers are full stop, a note of question mark, a note of exclamation or exclamatory mark, quotation marks, or etc. These are some examples. Now it is turn to learn the use of full stop. First of all, we will see the meaning of full stop. Full stop is a compound word. It is a compound word made up of two words. That means full and stop. Full means उर्दू में मुकम्मल, stop means रुकना. तो full stop का मतलब क्या हुआ? मुकम्मल रुकना. जहां कहीं भी मुकम्मल तौर पे रुकने की जरूरत पड़ेगी, full stop का इस्तेमाल करना है. And it is also known as period. The second name of full stop is period.
Remember one thing, that it is the biggest pause in English language. It is the biggest pause. Pause मतलब ठहराव, सबसे बड़ा ठहराव, जहां पे ज्यादा देर हम रुक सकते हैं, biggest pause इंग्लिश में है. Where it is used? It is used at the end of a sentence. We know it very well, but the sentence should be either declarative, optative, or imperative sentence. Sentence should be declarative, optative, imperative sentence. Declarative, simple sentence. This is a ball. This is a ball. This will be discussed separately, these types of sentences. We can say the other way of discussing this use of full stop is, it is used at the end of those sentences where we cannot use question mark or note of exclamation there. Note of exclamation is used at the end of exclamatory sentences, and it is used at the end of these interrogatory marks. Remember, you can remember it in this way. This is the right way of remembering. At the end of declarative sentence, optative. काश में कुछ होता, shut the door, imperative, हुक्मिया. इसे तफसीलिया, जुमले तफसीलिया या बयानिया कहते हैं उर्दू में. इससे जुमले तमन्नाई कहते हैं, यानी तमन्ना जिसमें हो, जिसमें तमन्ना दिखाई जाए. इम्परेटिव, जिसमें हुक्म यहाँ पे हो. शट द डोर, इसे हम कह सकते हैं जुमले हुक्मिया, इससे कहा जाता है. तो ये सेपरेटली हम पढ़ेंगे. आप ये याद रखोगे, जहां कहीं भी ऐसे इस टाइप के जुमले होंगे, उनके आखिर पे आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो. Full stop is also used in abbreviations. On the basis of full stop usage, abbreviations have three types. There are three types of abbreviations. One type is that there is no dot used in between these alphabets. That means CIA, BBC, and UN, etc. No full stop is used in between these abbreviations. And second type is E.G, E.T.C, I.E. That means, for example, etc. In between these type of abbreviations, full stop is always used there. And third type is MLA, M.L.A, C.P.U. There is sometimes full stop is used and sometimes it is not used. Actually, the confusion lies there. Why there is sometimes full stop used and sometimes not? एक्चुअली यहाँ पे मसला क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हर कोई कंप्यूटर पे टाइपिंग करता है, जिसकी वजह से वहां पे जल्दी जल्दी लिखने की वजह से डॉट को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है. दूसरी जो वजह है, इंग्लिश जो है वो दो टाइप के हैं, यानी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश में अगर कोई एब्रिवेशन बनती है, सपोज फर्स्ट और लास्ट लेटर से, यानी डॉक्टर अगर हम देखें DOCTOR, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, द एब्रिवेशन इज मेड and here no dot is used. But in American English, DR dot is definitely used. Similarly, A.M, small A.M is used in British English, and capital AM without any dot is used in American English. And that was the usage of full stop. Mark of exclamation or exclamatory mark. It is written like this. A dot is used below this. And in Urdu we call it alamati fijaya. इसे उर्दू में क्या कहते हैं? अलामती फिजाया. And where it is used? Where there is some sudden feelings. Where there is some sudden feelings, whether this is happiness or sadness. Somebody can say, "Wow, it is wonderful." So facial expression changes. हमें दूर से ही पता चलता है कि इसके ये अल्फाज पे इसका अपना कंट्रोल नहीं है. जब हमारे अल्फाज पे अपना कंट्रोल नहीं होगा, खुद का कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर वहां पे लास्ट पे क्या इस्तेमाल होता है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. या कहीं ऐसा होता है कोई बच्चा पहले नंबर पे आया, तो वो क्या कहता है? वाओ, आई केम फर्स्ट, आई गॉट फर्स्ट रैंक. So it shows some certain feelings. Whenever you will see in English language like this, you should read that very sentence like this. You should change your facial expression. And coming to the next topic, that is question mark. Question mark, सवालिया निशान इसे कहते हैं. उर्दू में इसे सवालिया निशान कहते हैं. सवालिया निशान. And in English, it has another name, that is interrogatory mark. Where it is used? It is used when we ask a question to anybody. We should use at the end of that very sentence like this.
Question mark is used at the end of the sentence like the full stop. It is also a biggest pause in the English language. There are only two biggest pauses. One is full stop, and full stop is widely used, and question mark is rarely used in English language. And also this is used at the end of the question tag. Question tag, what does this mean? Suppose I say, this is my pen. This is my pen. And we use a small part of sentence, a group of sentence, that is, isn't it? Isn't it? This part is known as question tag. When we convert a declarative sentence into interrogatory sentence, the part used at the end of that very sentence is known as question tag. And after the question tag, we should use interrogatory mark. Question mark can be used at the end of a declarative sentence. At the end of a declarative sentence. How? This is your pen. This is a declarative sentence. A full stop has been used. Why the full stop has been used? I read it like this. This is your pen. This is your pen. I can read it as, when I will read it as, this is your pen. I am asking you, this is your pen. When I ask you, by changing my facial expression, I can change a declarative sentence into an interrogatory one. एक जुमले तफसीली या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस को हम इंट्रागेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. कब कन्वर्ट कर सकते हैं? जब हमारा फेशियल यानी चेहरे की एक्सप्रेशन तब्दील होगी. दिस इज योर पेन, दिस इज सिंपल सेंटेंस, दिस इज योर पेन, तब जाके यहाँ पे क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा. व्हेन आई विल से दिस इज योर पेन, देन वी शुड यूज एज लाइक दिस. क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ कोमा. कोमा उर्दू में इसे सख्ता कहते हैं. सख्ता, सख्ता. कोमा आपने सही सुना. कोमा जब कोई बीमार होता है, ज्यादा बीमार, तो वो कोमा में चला जाता है, उसे भी सख्ता कहते हैं. यहां पे हम देखेंगे कोमा क्या है. कोमा एक स्मॉल पॉज. इट इज ए स्मॉल पॉज. जहां कहीं हम थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, हम अपनी ब्रीथ को छोड़ देते हैं, वहां पे कामा का इस्तेमाल होता है. इसे स्मॉल पॉज कहते हैं. स्मॉल पॉज मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना. तो कहां पे इस्तेमाल होता है? वेयर इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट. लिस्ट, जब कहीं भी हमें लिस्ट कहने की जरूरत पड़े तो वहां पे कामा का इस्तेमाल होता है. सपोज ए पेन, ए पेंसिल, ए बुक, comma is used in between a list. And we can say in between the same figures of speech. Sorry, not figures, same parts of speech. Parts of speech. Same parts of speech. Nouns are continuously used, hence we should use in between nouns comma. And if there are verbs used, we should use comma. If there are adverbs used, we should use comma. So we can say same parts of speech. Between same parts of speech, a comma is used. Or in other words, we can say in a list, we should use in between those very elements of a list, a comma is used in between them. And second usage of comma is, it is very easy before a question tag. We read it recently, we learned it recently. What does a question tag mean? Question tag means a group of words added at the end of a declarative sentence to convert that very part into interrogatory one. This is my pen. This is my pen. This is my pen. Isn't it? Isn't it? Here the comma is used before this question tag. And third usage of comma is after words like, when you say yes, yes, I am coming. Yes, I am coming. After yes, we should use comma. And similarly, after no, after thank you, we should use comma, and rest of the sentence is written. And fourth usage of comma is, it is used when we call somebody. Suppose Bilal, come here. Bilal, come here. Yeah. Or anyone else. When we call somebody, we should use comma after the calling letter. Or we can say
Sir, may I come in? May I come in? After sir, we should use comma. And fifth usage is between day and year. Between day and year, just like this. April 29, and comma is used between day and year. Between day and year, here a comma is always used. If you will write the date in this time. Next usage of comma is after reporting verb. After reporting verb, reporting verb part of sentence जो है उसके बाद comma का इस्तेमाल होता है. He said to me. यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट के बाद कामा का इस्तेमाल होता है. ये तो आप सभी जानते ही है. टू सेट ऑफ इंटरप्शन. नेक्स्ट यूजेज इज इंटरप्शन. इंटरप्शन, सपोज आई एम कॉलिंग समबडी, come here, come and come. In between come and come, I pause it a little bit. While I pause it, I should use a comma there. और वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? कामा का इस्तेमाल करना चाहिए. आजा, आजा. इसी तरह जब हम रुक रुक के कहीं पे भी चलते हैं, जहां कहीं भी हम रुकते हैं, वहां पे कामा का इस्तेमाल होता है. आफ्टर ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग तो जानती है, ये लेटर्स में इस्तेमाल होता है. जब हम कहीं पे कोई चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, वहां पे पहले हम लिखते हैं माय डियर फादर. उसके बाद क्या करना है? कामा का इस्तेमाल करना है. डियर ब्रदर, कामा का इस्तेमाल करना है. सर, कामा का इस्तेमाल करना है. These are known as greetings. इन greetings के बाद क्या कामा का इस्तेमाल होता है. And next one is to separate non-essential part of a sentence. What does this mean? Non-essential, गैर जरूरी पार्ट, जिसकी ज्यादा अहमियत नहीं हो, जिसे हम अगर निकाल दें तो जुमले के माने पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. सपोज सचिन तेंदुलकर, हमें कहना है सचिन तेंदुलकर हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट. हमें ये कहना है वो क्रिकेट से रिटायर हो गया, उसने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया. मैं बीच में क्या कहता हूं? एन इंडियन क्रिकेटर. ये मैं वजाहत देता हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं. और वी कैन से दिस इज नॉन एसेंशियल पार्ट. अगर मैं ये यहाँ पे निकाल दूं तब भी जुमले के माने पे असर नहीं पड़ना चाहिए, तब जाके हम इसके पहले और आखिर में कामा का इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज सचिन तेंदुलकर हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट. ये पूरा सेंटेंस है, इसमें मैंने इंफॉर्मेशन जो ऐड की थी एन इंडियन क्रिकेटर. दिस इज नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यू कैन सेपरेट दिस नॉन एसेंशियल पार्ट बाय यूजिंग कामा. तो सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. और ये सबसे आखिर पे जो हम पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और डिफरेंट क्लॉज वी कैन से, जहां पे कोई क्या कह सकते हैं, कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है.